Assalamualaikum. So today our lecture about the topic is kinematics. Okay, so this is related to B1 physics AS level. So first of all, we have to know, okay, what is the definition of kinematics. Okay, so informally इसकी definition देखेंगे, the study of motion. Okay, the study of motion. Kinematics is the branch of physics in which the study of motion is known as kinematics without reference of force. ठीक है, without any reference or any cause of motion. मतलब आपने इसमें cause of motion नहीं पढ़ना, इसमें reference of motion नहीं पढ़ना, only study of motion के how the body move from this to this position. Let's say this is the A place and this is the B place. तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया है इसने, इसमें क्या हमारे पास पैरामीटर्स इस्तेमाल हुए हैं, इसमें क्या चीजें इस्तेमाल हुई हैं जिसको हम जो है एज अ स्टडी ऑफ मोशन के तौर पे हम पढ़ सकते हैं. तो दिस इज द काइनेमेटिक डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. ओके, so let's first of all we have to know okay, the quantities, two type of physical quantities more, scalar quantities. एक हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, एंड another type of physical quantities are known as vector quantities. ठीक है. सो अच्छा, इन दोनों में दो चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों के पास दो चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है दोनों के पास होंगे, इसके पास भी यूनिट होगा और इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज जो डिफर करती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को, वो है डायरेक्शन. सो वेक्टर क्वांटिटी हैव अ डायरेक्शन. ओके, those quantity which we cannot represent it, which we cannot define without direction, so those quantities are known as vector quantity, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, they are scalar quantities. अच्छा, कुछ एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज के और कुछ एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज की देखना. लेट्स से हमारे पास ये, इसको हम राइट कर लेते हैं. So we have some scalar quantities. अच्छा, ये हमारे पास जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं. ये याद रखिएगा कि स्केलर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट डायरेक्शन. दे आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज. लेकिन सबसे पहले मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, स्पीड है, एनर्जी है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है, डेंसिटी है. ओके, सो वॉल्यूम है, एरिया है. ठीक है, दे आर ऑल्सो स्केलर quantities. All are scalar quantities. Okay, so चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज से रिलेटेड. इसको बल्कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. सो दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज एग्जांपल, कि वेक्टर क्वांटिटीज जिसको हम डायरेक्शन के बगैर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पोजीशन,
There is a straight display. There is a shortest distance between 2 points. Velocity, distance, displacement upon time, acceleration, velocity upon time, force is equal to ma. Is also a scale vector quantity. Weight, moment, momentum. Sorry, p is equal to mv. This is also a scalar vector quantity. Impulse, electric field strength, intensity भी कह सकते हैं. Magnetic field strength या intensity भी कह सकते हैं. Gravitational field strength F is equal to g m1 m2 upon r square. This is also a vector quantity. Torque. Torque is also a turning effect of force F cross. Moment arm is also a scalar vector quantity. Angular velocity कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो सर्किल में मूव कर रहा हो तो उसकी जो वेलोसिटी है. So this is also vector quantity. Acceleration, angular acceleration, position vector, thrust जो है फोर्स ये भी अब थ्रस्ट कह सकते हैं इसको. लेफ्ट influence up thrust left drag force is also a vector quantity. ठीक है, ये सारे के सारी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम. अब कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं और कुछ उसकी यूनिट्स वगैरह देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास है डिस्टेंस. ओके, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस is a length, informal length from one point to another point with without direction is known as distance. ठीक है, मैं इसको रीड ही कर रहा हूँ. Length is a undirectional distance between undirectional length between one point to another point and the unit of length is meter and what is this is a scalar quantity. अच्छा, मैं ये भी बताता जाऊंगा कि स्केलर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी और उसका हम यूनिट भी देखते जाएंगे ताकि एमसीक्यूज वाइज आपको ये आसानी हो जाए. फिर इसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. ओके, अच्छा, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एस. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस बार, यूनिट इज मीटर एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, जैसे ए से लेके बी तक बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं मगर द शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट है जिसमें डायरेक्शन भी होगी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, या ऐसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन हो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर है, denoted by s prime. Okay, so let's see the definition of speed. Okay, so what is the definition of speed? हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा. स्पीड denoted by v. ठीक है, the rate of change of displacement sorry rate of change of distance with respect to time is called speed. देखें, इसकी डेफिनेशन लिख नहीं रहा, रीड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक एक ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी डिस्टेंस के जरिए से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको कितना टाइम लग रहा है, इज कॉल्ड स्पीड. दिस इज स्केलर क्वांटिटी. ओके, दिस इज स्केलर क्वांटिटी. व्हाई स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज देयर इज नो नीड टू डिफाइन डायरेक्शन. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट मीटर सेकंड. So we can write also meter per second is meter per second and we can also write ms minus 1. Okay, so let's see the definition of velocity. So velocity को denote किया जाता है v prime से. What is the definite formula of velocity? Rate of change of displacement with respect to time. This denoted by displacement. Okay, बस वही उसी तरह का है, बस इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. दिस वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी नीड टू डिफाइन वेलोसिटी with direction. Okay, so this is vector quantity and the unit of same with velocity speed meter per second according to the definition formula. Displacement का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है और we can write also ms minus 1. सही है. इसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन. So what is the formula of acceleration? First of all, acceleration is rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. कितने टाइम में कितनी velocity change होती है, ये velocity का change with respect to time is called acceleration. This is vector quantity. Okay, this is vector quantity. Okay, अच्छा, vector quantity है and the unit of acceleration is meter per second square or we can write the unit of acceleration is ms minus 2. ठीक है,
अच्छा, इसके बाद जो है हम कुछ वो देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा देखें, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का चेंज होना, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी is increase, so given acceleration is positive acceleration. Let's say हमारे पास initial velocity है 0 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कुछ लगा के भाई 10 सेकंड में हुई या 20 सेकंड में हुई। सो अब देखें यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो द गिवन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। देन वी विल सी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डिक्लेरेशन, deceleration, deceleration. So what is the definition? If velocity decrease, if velocity will decrease, velocity will decrease. So create acceleration due to the decrement of velocity is known as deceleration, negative acceleration। मतलब ये है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट की जीरो, सॉरी हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इनिशियल वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर टाइम 5 सेकेंड the final velocity is 0 meter per second, the velocity decrease after some time, so the acceleration is produced due to the decrement of velocity, so this is the नेगेटिव एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन। ओके, यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सवालात करेंगे। अल्लाह हाफिज।